Assalamu alaikum. I hope you're doing great. Welcome to the seventh module of our course, in which we're going to study articles, parts of speech, and pronunciation. So, in this module, we're going to learn how to speak correctly in terms of pronunciation, in terms of grammar, and of course, that way we'll be more confident and our speech will be more natural. So here is the module overview. This is what we'll cover in this module. First is article. We will be covering articles. We will be learning when to use general versus specific articles and how they match nouns, and we will be learning hidden rules and daily use of those rules. जैसे small patterns होते हैं जो native speakers use करते हैं, जिनकी वजह से उनकी language जो है वो काफ़ी natural होती है. And then we'll be learning parts of speech. Parts of speech हमने पढ़े हुए हैं, I know, but this is kind of an expanded version of this lecture. तो simplified होगा. मैं आपको कुछ easy labels सिखाऊंगी each words के लिए, तो आपको sentences decode करने में ज़्यादा आसानी होगी. Next is we are going to learn pronunciation tricks. एक ही single habit होगी which I'll show you, which will help you to improve your pronunciation. And then there are 25 commonly mispronounced words. And lastly, we have native like speaking. In this lesson, we will work on intonation, rhythm, and voice modulation to sound natural. So, the goal is that by the end, you will not only know the rules, but you will know how to use them naturally and confidently. So first of all, what are articles? Articles एक जो small words होते हैं जो हम nouns के पहले हम वो place करते हैं to show whether we mean something general or specific. अच्छा, articles होते कौन कौन से हैं? A, an, and the. ये 3 आर्टिकल्स होते हैं. ए और एन जो है वो जनरल आर्टिकल्स हैं एंड द इज़ अ स्पेसिफिक वन. तो हम इन दोनों का यूज़ सीखेंगे. एंड यहाँ पे मैं आपको टिप बता देती हूँ आर्टिकल्स आइडेंटिफाई करने की. whenever there is an article, we have to focus on the sound. Okay, whether it's a vowel or it's a consonant sound, we have to focus on those sounds, not just the letter when we are choosing a or n. तो इसकी भी हम सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, इसकी हम एक्टिविटीज़ करेंगे. Second lesson is parts of speech, which again I will be giving you a very simplified lesson which will help you to understand more quickly. So you have to think of each word as having a job. जैसे आप ये सोचो कि ओके दिस वर्ड हैज़ दिस जॉब, दिस वर्ड हैज़ दिस जॉब, तो उस हिसाब से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ईजीली समझ पाओगे. कैसे? जैसे नाउन है तो नाउन, ऑलवेज थिंक नाउन एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, a place, thing like dog, city, or idea. Anything like that is a noun. When it comes to verb means action or a state. Run, is, seem, ऐसे कुछ words होते हैं जो हम verb के लिए use करते हैं. Next is adjective and adverb. तो adjective जो होते हैं वो noun को describe करते हैं and adverb जो होते हैं वो verb को describe करते हैं. Whenever we want to describe और हमें किसी भी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है, वी यूज़ एन एडजेक्टिव. एंड हमें जब भी किसी वर्ब के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वी यूज़ एडवर्ब. एंड वी हैव अदर स्मॉल जॉब्स एज वेल like prepositions, conjunctions, pronouns, and interjections. So we will learn these in the parts of speech lecture. Okay, here is a quick example. यहाँ पे मैंने आपको labels in action दिया है. जैसे there is a sentence, she quickly opened the door. Now, how would we know which one is noun, which one is pronoun, which one is verb, and which one is adjective or adverb, right? So इसको हम identify करना भी सीखेंगे. यहाँ पे she is a pronoun because ये she जो है वो किसी भी लड़की के नाम को replace कर रही है, right? So that would be a pronoun. Quickly is an adverb because हम उसको verb को explain कर रहे हैं, shows how the action happened. तो ये adverb हो गया. यहाँ पे verb क्या है? Opened मतलब action है, उसने किया है. So that opened is a verb.
एंड लास्टली डोर है वो नाउन है यहाँ पे, जिस पे हमने एक्ट किया है, जिस पे प्रोनाउन ने एक्ट किया है, तो वो हो गया नाउन. Here is a short practice for you as well. You have to label 5 sentences each day to build recognition speed. जब भी आप रोज़ 5 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करोगे, फिर उनमें ये चारों चीज़ें लेबल करोगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, टू रिकॉग्नाइज दीज different parts of speech. So coming towards the interactive activity, you have to work in this. You have to grab a friend or a family member. The sentence is, the happy child ran fast. Now think about it, read about the sentence and then answer these questions. Which word is the noun? Which word describes the noun? Which word shows action? So इन तीनों questions का आपको जवाब देना है while looking at this sentence. Let's look at the answers. Which word is the noun? Child is the noun because we are talking about a person here. Which word describes the noun? Happy. The happy child ran fast. तो हम happy किसको बोल रहे हैं? Child को, which is describing the child, right? तो जो भी word noun को describe कर रहा है, that is an adjective. Which word shows action? Ran. The happy child ran fast. तो ran हो गया हमारा verb. So, you can even try swapping the article a happy child ran fast. How does the meaning change? Then you have to think about it. कि the में difference क्या था, the में meaning क्या आ रही है, a में meaning क्या आ रही है. This difference we will be learning in further lessons. So, in this module, we'll be learning how to speak like a native. In that lesson, we'll be learning intonation techniques. We'll be learning the flow, the rhythm. So to sound natural, you have to practice these kind of voice modulations. जो sentence rhythm होती हैं, जो intonation patterns होते हैं, जैसे statements versus questions, तो उनके जो कहने का अंदाज होता है वो कैसे चेंज होता है. जो सेंटेंस रिदम होती है, जैसे ग्रुप वर्ड्स इनटू शॉर्ट चंक्स. चंक्स मतलब स्ट्रेस और कंटेंट, फिर उनमें से हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे. यू हैव टू पॉज स्लाइटली बिटवीन द चंक्स. हम जैसे ही कोई कन्वर्जेशन में होते हैं, हम कोई भी सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके बाद हमें एक पॉज लेना होता है. एंड देन कम्स द वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसमें हमें अपनी वॉल्यूम, अपना पिच थोड़ा सा चेंज करना होता है अपने कॉन्वर्जेशन, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ताकि हम उस हिसाब से अपना इमोशन दिखा सकें और उस हिसाब से हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस दे सकें, ज़्यादा एम्फेसिस दे सकें. हमारी लैंग्वेज मोनोटोन नहीं होनी चाहिए. तो ये सारा हम डिटेल में सीखेंगे. लेकिन अभी के लिए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस टिप रखी है. यू हैव टू रिकॉर्ड शॉर्ट सेंटेंसेस एंड you can compare your intonation to a native speaker as well. You can watch their interviews or something like that. So here goes the practice dialogue. You have to read the conversation aloud with natural tone and emotion. So place yourself in this situation and say out loud these sentences according to that emotions. So the first person is saying, "Are you ready?" And the second person is saying, "Yes, I am." And then the first person is replying, "Let's go." Did you notice मेरी voice में, मेरे tone में कैसे difference आया? तो यही टोन, यही वॉइस मॉड्यूलेशन, यही पिच का अप डाउन होना हमें सीखना है. सो स्टेप नंबर 1 इज़ इमोशन. यू हैव टू मैच योर टोन टू द इमोशन. एक्साइटमेंट हो, सैडनेस हो, एंग्री हो, काम हो, क्यूरियोसिटी हो, ऑल द काइंड ऑफ इमोशंस. स्टेप नंबर 2 इज़ द स्ट्रेस. हमें एम्फेसाइज करना है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे. जैसे यहाँ पे इसने पूछा है आर यू रेडी, तो आर यू इज़ नॉट अच्छा, हम ना सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट वर्ड्स पे भी एम्फेसिस कर सकते हैं. जैसे आर यू रेडी, हमने यहाँ पे आर पे फोकस किया है. व्हेन आई एम एम्फेसाइजिंग यू, देन द सेंटेंस विल बी आर यू रेडी. एंड व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन रेडी, द सेंटेंस वुड गो लाइक आर यू रेडी. सो डिड यू नोटिस कि मैंने कैसे हर सेंटेंस के स्ट्रेस देकर और फिर तीनों सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है. So that is what we have to learn. The step number 3 is flow. और
after all the practice, you will gain that flow. So what makes your language, what makes you sound so fluent? First of all, of course, it's the correct grammar. We have to use accurate article and the sentence structure, and then clear pronunciation. Third comes the natural tone, and lastly, it's the confidence that makes you sound fluent. So remember, fluency equals to accuracy plus confidence. Okay, so are you ready to begin this module? Because I'm sure this is going to be a very interesting module, because इसमें हम बहुत ही थोड़ी different चीज़ें पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक चीज़ें नहीं हैं. तो I'm sure you will be very intrigued by it, you will be very attracted by it, and you'll have fun. So, and of course, you'll gain confidence, you will have very fewer errors with articles, and you will have the clearer pronunciation, and of course much more natural speech. So the next steps for you are, you have to practice daily. For this module, for this lesson, I have given you 2 to 3 short lessons. So I'm hoping that you will complete those tasks, and we'll begin the module number 7. So let's start. Do not forget to watch every lessons of this module, because this is going to be amazing for you. So till then, take care. Bye.